हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के लीगल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, जिसमें डेफिनेशन दी गई है फैक्ट्स इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स की। बिकॉज सबसे पहले किसी भी एक्ट को रीड करने से पहले उसकी डेफिनेशंस को जानना इम्पॉर्टेंट है, ताकि उस रीड आउट उस बेर एक्ट में जो भी डेफिनेशंस में आगे वर्ड्स यूज़ किए होंगे ताकि उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स इन इशू के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप पहले अब जो आप स्क्रीन पर डेफिनेशंस देख रहे हैं इसके देखते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका हम मतलब समझेंगे इजीली वर्ड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, अ फैक्ट इन इशू मीन्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स the existence, non-existence, nature, extent of any right, liability, or disability asserted or denied in any suit or proceedings necessarily follow. Which means, what are facts in issue? Facts in issue are those facts which are alleged by one party and denied by the other party in the pleadings in a civil case, or alleged by the prosecution and denied by the accused in a criminal cases. सो फ्रेंड्स, अगर हम एक एग्जांपल में हम देखें कि अगर किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में मतलब जो बात हम दूसरी पार्टी की एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीन्स कि जो सामने वाली पार्टी है उसकी जो भी वो कह रहा है, जैसे कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, मीन्स कि किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब जिसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उसकी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो फैक्ट बन जाएगा। और जिस बात बात पे मतलब हमें ऑब्जेक्शन होगा या कोई भी आपत्ति होगी, फॉर सपोज कि जैसे सामने वाला के कहे कि भाई मैं कहीं का जज हूँ या मैं कोई भी एक बड़ी पोस्ट पे हूँ जिस पे हम बिलीव नहीं कर सकते या ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड वो नहीं हो सकता पॉसिबल, तो इस पर जो ऑब्जेक्शन होगा हमें, तो ये फैक्ट्स एंड इशू बन जाएगा। मतलब बेसिकली जो एक पार्टी सेकंड पार्टी की बात को एक्सेप्ट कर रही है तो वो एक फैक्ट होगा, और जब उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा, मीन्स की फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी की बात पे कोई ऑब्जेक्शन होगा, तो वो फैक्ट्स एंड इशू बन जाएगा और ये अदर पार्टी को प्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी एंड एट हिज ट्रायल फॉलोइंग आर द फैक्ट्स एंड इशू। जैसे ए बी के मर्डर के लिए उसको एक्यूज किया गया है, तो उसके ट्रायल पर जो फैक्ट्स एंड इशू होगा वो क्या क्या हो सकता है कि भाई ए कॉज्ड बीज डेथ, ए ने बी को मारा है। ए हैड इंटेंशन टू किल बी, कि भाई ए की इंटेंशन थी बी को मारने की। ए वॉज इनसेन, ए पागल था। तो ये फैक्ट्स एंड इशू है, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इसका अंदर एग्जाम्पल है, एक्स बैंक वॉज robbed yesterday when A was inside the bank is a fact. Means it is a fact that when X robbed a bank yesterday, A was inside the bank. It is a fact, and that A's purpose of presence therein or be witnessing before the bank's teller country may be a fact and issue before the trial court. Second is, A is accused of murder of B. At his trial, the following are facts in issue. That means A caused B's death, A had intention to kill B, or A was insane, or A had received grave and sudden provocation of B. Means these are the facts in issue which are not acceptable to the other party in any case. So friends, all the above are facts in issue because they are in contention and they determine the liability of A. Their truth increases or decreases the probability that A murdered B. Prosecution will have to establish the facts which prove that A murdered B before A can be convicted. And at the same time, the prosecution also has to disprove that any of the exceptions do not apply to A. A fact in issue is also known as by its Latin term, which is termed as factum probandum, which means fact to be proved. So friend, this is the definition of facts in issue. Now we come to the definition of relevant facts. According to section 3, one fact is said to be relevant to another when it is connected to the other in any of the ways referred to in the provisions contained in the provision of this act relating to relevancy of facts. The word relevant has two meanings. Firstly, in one sense, it means connected, and in another, admissible.
According to Stephen, relevancy means connection of events as cause and effect, and what is really meant by a relevant fact is a fact that has a certain degree of probative force. Now, this act does not give any definition of the word relevant. Section 5 to 55 of this Act, Indian Evidence Act, deal with the relevancy of facts, and a fact, in order to be relevant fact, must be connected with the facts in issue or with any other relevant fact in any of the ways referred to in section 5 to 55. And a fact not so connected is not a relevant fact. Section 11 would be important to mention here, and because as per section 11, in certain situations, facts not otherwise relevant become relevant. This happens if they are inconsistent with any fact and issue or relevant fact, or if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable. फ्रेंड्स वी कैन से जो फैक्ट्स एंड इशू से कनेक्टेड होते हैं, मतलब जिनसे किसी चीज़ को प्रूव्ड या डिसप्रूव्ड किया जा सके, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर केस में देखा था कि ए इज़ एक्यूज ऑफ मर्डर बी, तो उसमें क्या क्या फैक्ट्स एंड इशू हो सकते हैं कि भाई ए ने बी को मारा है, या ए की इंटेंशन थी बी के मारने की, या ए पागल था. अब जो जो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि भाई ए ने क्या बी की डेथ की है, या फिर उसकी ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, या फिर ए पागल था, इससे कनेक्टेड इन फैक्ट्स इन इशू से जो भी फैक्ट्स कनेक्टेड हैं, जो मतलब कि किसी चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सके, all these are relevant facts which has been discussed under section 5 to 55 of the evidence act. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, the term documents means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter. For example, writing is a document. Words printed, lithographed, or photographed are documents. A map or plan is a document. An inscription on a metal plate or a stone is a document. A caricature is a document. Friends, we can generally speaking, documents means anything or matter which contains a permanent record of a relevant fact or a fact in issue. Thus, a paper on which a contract is written is a document. So is a wall or chattel or stone on which something is inscribed. Photograph is a document. It has been said that the word document as used in the law of evidence should not be construed restrictively. Etymologically, the word means something which shows or teaches and is evidential or informative in its character. Of course, much depends upon the context in which the word documents is used. So friend, these are the following forms of documents which we seen in this on the screen in the form examples from A to E. Friends, you can note down all these points for examination point of view if you are pursuing for LLB or for any other examination. And friends, don't forget, if you like this video, to subscribe my channel for getting all the upcoming legal videos on the updates. And for friends, other uh, episodes vlogs on this subject, law of evidence, you can go to my playlist and see all these video will be uploaded here. Thanks for watching this video.